Assalamualaikum. This is Ayaz Ahmed from Lal Computer Institute. I am here English teacher. Today I will tell you about the modal verbs. First of all, let me tell you that what are modal verbs. मॉडल वर्ब्स एक्चुअली क्या होते हैं? मॉडल वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो मेन वर्ब और एक्शन वर्ब के साथ मिलकर मुख्तलिफ फंक्शंस प्ले करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं मॉडल वर्ब्स की. फॉर एग्ज़ाम्पल मे, माइट, कैन, कुड, ought, etc. So there are different modal verbs. So I will tell you about few that I have mentioned here because we have very too short time. So in the next video when I will explain all of these things in detail, so I will tell you about the further modal verbs as well. But today I will tell you here about a few of the modal verbs that I have mentioned. So first of all, I'm telling you about can and could. So can and could are used for the same thing, but just the difference is that can we use can in the present tense while we use could in the past tense. So why we use a can and could? We use can and could to show the ability. So you have to remember these things, that why we use them. So first of all, we use a can to show the ability of anything. Okay, how to show the ability? For example, हम इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि किसी इंसान के बारे में ये बताने के लिए कि वो ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता. तो कैन का मकसद होता है कुछ कर सकना. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल इफ we say that I can write. Here in this sentence the structure is, first of all, we have used the subject and then V1 means first form of verb, and then we have used the subject, then can, and after that we have used the first form of the verb. It means V1. I can write. Here I is subject, can is the modal verb, and then we have used V1. It means the first form of the verb write. I can write. If I say that you can go, if I can say that we can come, so here we are using can for the showing the ability of the subject, that one can do something or not. And if we have to show the inability, that one cannot do something, we will use can't or cannot, or simply can't in the sentence instead of can. So we will say that we can't come, I can't write, you can't go. So in this way, if you have to use for the inability, then you have to use can't. And you may also use it for requesting someone politely. For example, if you are asking someone to help you, so you can say that help me please. But in order to say it more politely, you can say can you help me please, could you help me please. So you will use the modal verb like can, could, and then you will use the subject, and then you will use the action for which you are requesting, and then you will use the object and then please. For example, can you give me a glass of water please. So here you have used can, it is a modal verb, and then you have used the subject, that is you, and then you have used the action for which you are requesting, that give, and then you have used the object, that is water, and then you have used please. So in this way you will use the modal verb can or could. So let me tell you one thing here, that for requesting politely you can use a can and could both. So can you say you can say that can you give me a glass of water please, or could you give me a glass of water please. So both of these can be used for this one. So you can also use it for seeking और ग्रांटिंग द परमिशन. इट मीन्स आप इजाज़त लेने के लिए और इजाज़त देने के लिए, दोनों मामलात के लिए आप कैन को इस्तेमाल कर सकते हो. कैसे? फॉर एग्जांपल, इफ़ अ स्टूडेंट इज़ आस्किंग दैट मे ही कम इन द क्लास और नॉट, सो ही विल से दैट कैन आई कम. So he is asking a question, and here is the permission. So he can say that can I come. So the teacher will say yes, you can come. So for granting and for seeking permission, both we can use it. So second one is may or might. May or might are used for the possibility, and it is also used for seeking and granting permission. So how can we use it for a possibility? For example, someone says that it may rain today. It may rain today. आज बारिश हो सकती है. So may यहाँ पे बता रहा है कि ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे आज बारिश हो सकती है.
सो ज़्यादा पॉसिबिलिटी जब होती है उसके लिए हम माइट लगाते हैं, और जब कम चांसेस हों, थोड़ी बहुत चांसेस हमें नज़र आ रहे हों, उसके लिए हम मे लगा सकते हैं. तो वी कैन से दैट it may rain today, or we can say that it might rain today. So both of these words are being used in the sentence for showing the possibility of something that it may happen. So इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा हम सीकिंग एंड ग्रांटिंग परमिशन के लिए भी हम करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई परमिशन लेना चाह रहा है कि मे आई आस्क अ क्वेश्चन, so if someone is granting the permission, he can say that you may ask. Or if someone is asking that may I go, क्या मैं जा सकता हूँ, the second one can say that yes you may go, जी आप जा सकते हैं. so इसी तरीके से हम इसको परमिशन ग्रांट करने के लिए, परमिशन सीख करने, दोनों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट वन आई हैव टोल्ड शुड. वाई डू वी यूज शुड हम यूज करते हैं कोई ऑब्लिगेशन या कोई एडवाइस देने के लिए, कोई ऑब्लिगेशन को शो करने के लिए हम यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को एडवाइस देने के लिए हम कर रहे हैं, किसी को हम कह रहे हैं कि आपको हमेशा सच बोलना चाहिए, यू आर एडवाइजिंग someone, so you can say that you should speak truth, you should always speak truth. तो यहाँ पे should क्यों इस्तेमाल हो रहा है? चाहिए मीन्स के हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए. सो यू शुड स्पीक ट्रूथ. सो हम इसको शुड को किसी ऑब्लिगेशन को शो करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मुस्लिम शुड ऑफर प्रेयर 5 times a day. यहाँ पे ऑब्लिगेशन है, ये मुस्लिम का ऑब्लिगेशन है कि उनको 5 टाइम पे नमाज अदा करनी चाहिए. तो ये शुड जो है वो ऑब्लिगेशन के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है. सो वी कैन सिंपली से दैट शुड को हम सजेशन के लिए, शुड को हम एडवाइस के लिए या ऑब्लिगेशन को शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. और ऑट टू, ये भी एक किस्म का हम एडवाइस देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जस्ट लाइक शुड. तो शुड की जगह हम ऑट टू भी कर सकते हैं, लेकिन जब मस्ट कोई चीज़ होती है कि भाई ये लाजमी तुम्हें करनी चाहिए, तो उसके लिए हम ऑट टू करते हैं कि यू ऑट टू गो देयर अर्ली, आपको वहाँ जल्दी जाना चाहिए या वहाँ पे आपको जल्दी पहुँचने की ज़रूरत है. इट मीन्स जब वो कंप्लीटली ऑब्लिगेशन को ये करना ही करना है और हम उसको एडवाइस कर रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देन वी ऑट टू इस्तेमाल कर सकते हैं. So these were a few of the modal verbs. In the next video, I will give the detailed explanation about the modal verbs. So wait till the next video. For now, take care of yourself and give me permission. Allah Hafiz.